सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी खैरियत से होगी और आपकी छुट्टियां और वेकेशन थैंक्स गिविंग बहुत अच्छा गुजरा होगा। और हाँ, ये थैंक्स गिविंग जो है ना, ये एक सबसे अच्छा ट्रेडिशन है अमेरिका में कि इसमें गरीब गुरबा को खाना भी खिलाया जाता है, फैमिली टुगेदर होती हैं। दैट्स अ वेरी गुड ट्रेडिशन, वी शुड रियली सेलिब्रेट दिस। इसके अलावा ऑफ कोर्स आज प्रोग्राम हमेशा की तरह भरपूर है और आज एक बार फिर डॉक्टर जे सफ़ीर सेहत में आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो आज आपकी मुलाकात होगी जे सीक्रेट से, यानी कि डॉक्टर जमाल, इनका ताल्लुक़ डैलस से है और ये आपकी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं और आपको हैंडसम, ब्यूटीफुल और स्लिम देखना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून, सफ़ीर पाकिस्तान, डोंट गो अवे। आइए देखते हैं कुछ प्रोग्राम की हाइलाइट्स, देन विल ब्रिंग दिस प्रोग्राम to you direct in your living room and your home and your shop and your store, so you can watch Dr. J and become healthier. इससे पहले कि मैं डॉक्टर जे को पेश करूं आपकी खिदमत में, मैं बताता चलूं कि लॉस एंजलिस में नए कौंसल जनरल जनाब हामिद असगर जो है, उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, अपनी फ़राइज़ संभाल लिए हैं और उनकी एजाज़ में एक लंच था जिसमें तमाम कम्युनिटी लीडर को इनवाइट किया गया और उनसे मुतारिफ़ कराया और ये प्रोग्राम डॉक्टर आसिम महमूद ने अपनी रहाइश गाह पर रखा था। खुशामदीद मिस्टर हामिद असगर साहब और तसव्वुर साहब अब एल से जा चुके हैं, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। तो ये रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट ज़ोर शोर से उसकी तैयारियाँ जारी सारी हैं। एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने शहर, अपने स्टेट से लोगों को नॉमिनेट करें। इसके अलावा दुबई में होने वाला CEO फोरम का जो फेस्टिवल था, जो इवेंट थी, वो ऑन है और जिसमें हम दुनिया भर से नहायत ही कामयाब तरीन लोगों को दुबई में इनवाइट करना चाह रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। तो वो प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह मार्च के अवाइल में होगा। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान जैसा आप जानते हैं कि नगरी नगरी पहुंचता है और मैं चाहूँगा कि आप अपने इलाके से, अपने शहर से अपनी रिपोर्ट भेजें। वी आर आल्सो लुकिंग फॉर रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल ओवर अमेरिका जो सफ़ीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहें तो हमसे राब्ते में रहें। तो नाज़रीन, आइए बिला ताख़ीर के देखते हैं आज डॉक्टर जे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। So now I present to you Dr. J's Secrets, Young and Slim Forever. Life is beautiful. Beauty is life. You are beautiful. You are important. You are the best. Write your own destiny. Welcome to another episode of Dr. J Secrets. Today we are going to talk about the beauty secret. Beauty from within, beauty from outside. Remember, you are beautiful. Everything in the world has been created beautiful. There's nothing which is not beautiful. But at the same time, people have questions.
Beauty from within comes from the genetic code, from what's inside the person's own body. Beauty from outside is what is perceived, what people see. Can genetic code be changed? Can transformations happen? Can external environment effect be reduced on the outside beauty so that things look better? Health and beauty go hand in hand. If a person is healthy, they are beautiful. It doesn't matter if they're black, white, purple, Asian, American, Japanese, or anybody. Health and beauty goes hand in hand. Beauty from within, can genetic code be changed? You must have seen a caterpillar convert into a butterfly. Caterpillar is beautiful, butterfly is beautiful. The genetic code changed them. But at the same time, environmental effect happens. The butterfly may be trying to fly, and rain happens, sunshine happens, thunder, lightning, bad wind, too much dry environment. That poor butterfly may not be able to survive. So we're going to talk about today the external environment which can affect the body. And we're going to talk about the internal things which a person can keep them healthy, and especially where it shows, their skin. Everybody wants their skin to be perfect and healthy and glow like it's shining and the health is coming out. What happens as a person is growing? Let's start from the beginning. When the baby is born, everybody loves the baby skin. Say, oh, look at the baby skin. Your skin's just like the baby skin, nice and good, because that skin has not been affected by any external environment. Nature has created a very perfect environment for that baby, very safe from external environments, very safe from the sunlight and the UV rays and the toxins and the unnatural things which are being put in the food at times to make the food last long or be bigger. The nutrients are not there. But let's go to the basics again. Baby skin is nice and healthy. It comes in life. The baby is running around, growing older. Maybe the baby is you and you're going through puberty, you're trying to grow, and then what happened? Look, I got a cyst. Oh my God, I got an acne. Oh, what am I going to do? Everybody gets some acne sometime. Don't worry too much about it. Yes, there are things you can do about it. That I call the beauty secret of the skin. Many of the acne starts from something which has gone on in a person's diet, mostly 2-3 days before the acne starts, maybe 2-3 days before the little red spot starts. Everybody is different. You got to see, what did you do so many days ago? Now, I have had a lot of acne patients, and they have gone and they have bought this medicine, and they have bought that medicine, and that rub, and this peel, and that laser, and the acne does not go away because a lot of these acne comes from the inside. In fact, if you note, if you get a little acne spot, and remember, acne can happen at any age. Kids as young as 3-year-old or people as old as 40 years old can have a acne spot come in there. A little bit red spot starts. Many times it's from under the skin. Something happened. Maybe a little gland which was supposed to secrete some sweat and a little wax and keep the skin nice and healthy. That gland did not work right. And then, or the gland closed. And the ingredients in the gland starts getting swelled up. They don't have any place to go. Now they're swelling up, they're causing a little red spot. And then some germs here and there, maybe one of them entered there, and the germ is now multiplying and causing a little infection, and you get that little acne spot over here. So, what do you need to note about that? This is important. See, when your acne spot starts, what have you done in the last 2 or 3 days? Now,
this has been my experience, and I have seen a lot of people. I give them a little book, nowadays probably an iPad, and let them write it down. Okay, maybe they ate a chocolate 2 days before. They had a birthday. They had a birthday cake. On the birthday cake, there was chocolate. They ate the chocolate. Next day or the day later, they'll say, I got a little spot. Okay, maybe first time they didn't realize it. They took care of it. Hopefully with time it went away, no scar, everything looks nice and good. Couple of weeks or month later, another birthday come. They go over there, another chocolate cake is there, and now they eat the chocolate cake. So what's going to happen? 2 days later, this time they got a little bit spot on this side, and they start getting that little red spot, and it's coming, and it's coming. Oh my God, you got the acne. Now, if you note and realize what in your body is causing the acne, the most commonly I've seen is fatty food, some milk-based products, and maybe chocolate. It may not be the chocolate itself. It may be the lactate or some milk product in the chocolate or some cheese, which people have seen that that's what they eat, and after a few days they start getting some acne problem. It could be some other things. Maybe everybody is unique. In somebody else's case, it may be something spicy. If they eat something very spicy with a little chutney and a little kebab and stuff like that, they get an acne spot after that. So look at your own habits, your dietary habits, and see what you have eaten a couple of days before you have gotten the acne problem. Once you pin down, okay, maybe it was the chocolate. Okay, I'm not going to eat the chocolate. No acne coming through. Maybe you want to try one time, go and eat a chocolate cake, see what happens 2 days later. If you start getting it, now you've nailed it down. Now you know that chocolate is something which will cause you a little bit of acne. So what will you do in the future? You're going to try to avoid the chocolate. Now, we did talk about it. You go to a birthday and everybody wants to have you eat the birthday cake, and if you say, no, I don't want to eat, they're like, what, you don't like me, or you're not happy because it's my birthday? Okay, no, this is what I do, and it's a trick. That's my secret. I would say, oh, thank you so much. This cake looks so good, and oh man, I'm going to eat it. I'm going to walk back, and it's a chocolate cake. I'm not going to eat it because it's going to cause the acne. Okay, so what I do, I'm going to go over there, and while they're talking to other people, now, you know, the birthday boy and the family is happy. Oh, he took my chocolate cake. Okay, I'm going to go and say, then I'm usually going to put down someplace and walk. Remember, nobody will notice. I can assure you, you will be fine. Now, sometimes you may pretend to eat and just throw it away. Or if, you know, you don't want to throw it away, it's a good chocolate cake. You have not even touched it. It's there. Just go and move around and then put it someplace where maybe somebody else can eat it who does not have the problem with the chocolate like that. So what are you going to do? Find out what causes the acne problem in your case. When you find that out, maybe try it once and see if you can confirm it. Once you confirm it, avoid that thing from that point on. So milk products, I have had people who would say, whenever I drink the regular milk, maybe in a small bit in a tea is okay, but if they drank a whole glass, 2 days later, they'll get an acne spot. Somebody would be cheeseburger. And the reason I say the milk-based products, I think there's some ingredients with a little bit of fatty products in the milk and a milk chocolate and stuff together, which causes that secretions to get a little bit thicker, and one little gland which doesn't have the opening nice and good, that closes, and the germs and the secretions get accumulated in there, and that causes a red spot, and the body has to then clean it up, open a little pore, like a little acne spot, and it comes out. Some people get too worried about it. They start getting too stressed out. Oh, I don't look good. I cannot go to a party. I cannot go to this. I can assure you, everybody gets acne. Don't let it bother you. It doesn't matter if you're a nice, beautiful 18-year-old girl or you're a 40-year-old person.
Everybody gets a little acne. Maybe wash it with a little bit soap. If you want, maybe put a little concealing cream or a makeup of something on it. I don't like too much of these because these things can sometimes block the pores more. And what is going to happen? That pore which is blocked is going to cause more acne. The thing which I advise people, first of all, good cleanliness and good health. Every day take a shower, take a nice soap, rub your skin nice, so all the keratin and the material which could possibly clog your pores gets cleaned out, and that keeps your acne problem at bay anyway. One of the other things people mention a lot is the dry skin. They say, look, I don't have the acne problem, but man, I got this dry, bumpy, scaly skin, and it cracks and it hurts, and I have a problem. Sometimes it bleeds. That I have seen a lot related to environmental moisturizing. Now, what is environmental moisturizing? The air around it, the air around us has moisture, has water vapors. Your skin is in a constant balance with that moisture. So the little water molecules go in, the little water molecules come out. So there is a good, nice balance. When the air is too dry, the air wants the moisture. Where is it going to get the moisture from? Your body, your skin is going to pull the moisture out. So what happens? Your skin gets dry. When is the moisture problem the most? In too hot a weather, because there is no moisture in the air, there has not been any rain, and actually in a too cold a weather. People will say, why would air be dry in cold weather? This is what happens. You know what you do in cold weather? You keep your house nice and warm. You have your thermostat at 80, so your air is around nice and warm, so you're good. Your house has windows. Outside air is cold. Inside is warm. The window has a glass. The air will touch the window, and the water molecules from your inside air will stick to the window because outside is cold, and the water molecules like the colder environment better. So your air inside gets dry. I've had people who have such a dry skin that their heels, their feet, and especially the areas which are farther away from your body where the blood is not circulating, which is your fingers, your hands, your heels, they get so dry that the skin cracks and sometimes it's bleed and stuff. So this is what I tell. Get a nice moisturizing lotion. It doesn't have to be expensive. Get something basic with a little butter or a little cream every day in the morning and at night. Take a little bit and put in your most dry areas. Most dry areas of the skin are the hands and your feet and your toes, especially the back of the heel. Sometimes it is the one area which even starts cracking and bleeding. So put a little extra attention to it. Put a little more cream on it, especially at night. Sometimes you can even keep a sock on it at night, so what the cream you have put in doesn't just rub off on your bedding, or the moisture doesn't go out. Doing that, your skin dryness will be much, much more better. And good skin is good health. Now, we talked about the acne and the dry skin. What other things can affect the skin? As skin is what is showing up on your health? The sunlight. You're going out on the beach, you're going nice and good, you have a little tank top and stuff, and the UV rays and radiation and the sunlight is hitting your skin all the time. What does it do? Make your skin hot, make the moisture go away, kill some of the top layer skin, so you get like a little sunburn. And these UV radiations sometimes can cause cancer, and you don't want to hear about cancer. So let's say this. There are the skin creams with good UV protection. You got to put them on before you go to the sunlight. You know what do people do? Yeah, they take their sunscreen, they go out in the beach, now they're sitting in the sun and putting the sun cream on. The sun is already hitting you.
what you should do, and that's one of the skin secrets. You should put the sunscreen while you're in the shade, while you're at home. So once your sunscreen is on, then you go out to the beach, then you go out to your other stuff. So now the little protection of the SPF 15 or SPF 30, these are the codes which the sunscreen has. I like about the SPF somewhere between 15 to 30. Too high ones, too concentrated, sometimes they irritate the skin. So SPF 15 and 30 keeps your skin nice and good, doesn't have to be expensive, have something affordable and good. Keep it, put it on before you go out, so your skin will not get dry, not get burned, not have the problems, and the skin will keep healthy. Remember, skin is the largest organ of the body. Skin is what keeps you together. Without the skin, you just fall out, like things will start falling here and there. So skin is a nice envelope. You have to take good care of it. So the protection of the skin from the sun rays, having those things which will not cause and dry skin, which will not cause to have acne, which will not cause to have sunburn, will keep your skin nice and healthy. One of the things is skin has to bear a lot of external environment, sun, dry, heat. Couple of vitamins which I always recommend is one of the vitamins, vitamin B12. Every person, I think probably from the age of 10 or 15 years old, has a tendency that the vitamins level may start going down on them. They should take a good vitamin, especially a vitamin B12, because vitamin B12 is literally the vitamin which repairs your DNA. So if the B12 levels are low, your DNA doesn't repair good, and you must have heard, the UV rays causes the damage to the DNA. So when you have the vitamin B12 and a good level, your DNA, your skin DNA is very healthy and good, and your skin will be nice and protected. We talk about the dry skin, and let me bring out another secret, which is I call the humidifier secret or moisturizing secret. Whenever the air of the house or outside gets too dry, which is in too much heat or even too much cold, that's when the air inside the house gets too dry. People will go and buy humidifiers because they realize that when you have the humidifier going on, they feel better, they breathe better. They go and buy like a $40 or a $50 or $100 humidifier with a bag and a little filter and a little water and a little plug, and now they're having to change these every day and having to work around it, and kids can trample that off, and this electric cord can be a fire hazard and stuff like that. And with that much hassle, what do people do? That humidifier after 3 days is sitting in the corner and nobody's working it. So no water moisture is going out in the air. And what happens? They get dry, cracked feet, and the skin is having the problems. Their hands are getting dry. I have come up with a very good, nice, cheap, affordable solution for that. 2 things we can do. 1, at night, every day, every house has a bathtub. Put the water stopper in the bathtub and put a little bit of water, maybe about 2 inches. So what will happen, there will be a water surface about this big in the bathtub, and that water surface has a lot of moisture which is going up. Now, you will see if you put 2 inches at night, next in the morning it will be only 1 inch. Where did all that water go away? And if it's a bathtub and it's losing 1 inch of height of water, that's equivalent to about 20 glasses of water. So all that water has now evaporated in the air which is around you, which you're breathing, which your skin is touching. When it's touching the skin, it's keeping the skin nice and moist, and you will see your skin is not as dry and as cracked. Sometimes you'll say, oh, I don't have a bathtub, or I forgot to do that, or can I do something else? Yes, absolutely. Take one nice towel, which is about maybe a regular bath towel. Put it in the water and squeeze it out. So the towel is now wet. Just hang the towel
in your bathroom somewhere, maybe on the shower, or maybe on a chair, or maybe hang the towel in your bedroom on a chair. What will happen? All through the night, the moisture from the towel will keep on going up in your air, and in the morning the towel will be dry. So what happened to all that moisture? It went in the air while you were sleeping. The nice moisture is going in your lungs, and you're breathing better, and your skin is healthier, and you will start noticing that your heels are not as dry, and your hand is not as cracked, and you will be even more energetic when you got up in the morning because you slept much better. Many people will get too dry a nose and they say, oh my God, in winters my nose bleed. What happens? Same thing, nose is very sensitive to dryness. The skin inside the nose is very thin and has small capillaries right under the skin. If the top skin gets too dry, it contracts, and dry things kind of tend to contract. Have you seen a lake bed which the water has evaporated? What has happened to all the sand inside? You see all these lines and small blocks of chunky, dried up mud, look like cracked mud. That's exactly what happens to the nose sometimes, because the water and moisture is gone, and when the moisture is gone, it cracks, and the little capillaries, they bleed. So, dryness of the skin, dryness of the nose, these things can be prevented by keeping nice moisturizing inside your house. So we talked about the beauty from the outside, we talked about beauty from within. So these were the secrets of Dr. J Beauty Secrets. I have put some of these down on my book, which is in the chapter 18 on the page 75. If you read through the chapter, follow the instructions, your skin will be as glowy and as healthy and as acne free and as not dry, not having the sunburns and stuff as it should be. So until next time, keep on watching Dr. J Secrets. Soni da ga ni da ni ni da, na ni da ga ma ga sa. Soni da ga ni da ni ni da, na ni da ga ma. Sa ga ma da ma da ni da ni ni da pa ma da ma ga ga ma ga pa ma ga. Delicious Indian Pakistani cuisine awaits you. Come to Osmania Fine Dining located in Chicago, Illinois. Experience our tempting barbecue platters, tasty chicken jarka, delightful matka gosht, wonderful chicken biryani, amazing club sandwiches, our newly launched Mexican quesadillas, our healthy grilled chicken salad, and more. Open noon to 11:30 p.m. 7 days a week. And don't forget about our weekend lunch buffet special noon to 4 p.m. For more information, please call 773-262-1900. नादिन, ऑफ कोर्स शिकागो मेरा फेवरेट सिटी है, स्टेट है, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त वहाँ आबाद हैं, और जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वहाँ पे दीवान पे वो है उस्मानिया रेस्टोरेंट। उस्मानिया के खाने बस आप जाएं आपके मुंह में पानी आ जाएगा। एक तो बहुत ही खूबसूरत बना है, अच्छी पार्किंग है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनको डिज़ाइन किया है पूरे रेस्टोरेंट को, और जो उनके खाने हैं जिसमें पाकिस्तान के मुगलई खाने और निहारी और पाए और स्पेशली चपली कबाब और इसके अलावा चाइनीज़ खाने उनके वो भी बड़े शानदार हैं। जनाब लाका साहब, आपको मुबारक हो, आपने इतना अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे हैं और हम आपको प्रमोट करते रहेंगे क्योंकि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट ओन करते हैं और आप अच्छी कम्युनिटी को सर्विस दे रहे हैं। नादिन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट
लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में हमने काफ़ी रिपोर्ट शामिल की हैं जो पूरे अमेरिका से हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे कि किस शहर में क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट हमने इमिग्रेशन से मुतालिक भी रखी है कि लोगों ने इमिग्रेशन के बारे में अपनी राय का किस तरीके से इजहार किया है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, दरअसल यूँ तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो माशी समाजी मैदान में काफ़ी काम करती हैं, लेकिन माइक गूस का अंदाज अलग है काम करने का। उनका एक अदारा है टुगेदर, जिसके तहत वो चाहते हैं कि तमाम इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करें। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो लोगों को एकजा करें, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हो। वो चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें और अमेरिका में अमन कायम रखें और प्रोग्रेस भी करें। इस तकरीब में डैलस की जंग के एजाज़ी नुमाइंदे जाहिद खानंदा को उनकी बेकरार सहाफ़ती और दानिशवाराना सलाहियतों को और कामों को सराहते हुए अवार्ड दिया गया, जो उनकी वालदा माजिदा ने वसूल किया। तकरीब हर लिहाज से शानदार और कामयाब रही। Every society has heroes. That is men and women who have gone out of their way to help others, to serve others. There is a joy in it, actually. You know, simple joys, like if somebody falls on the street, a lady or a man falls, you go help them pick up their things. The whole day it lasts with you. So we got opportunities like that every day. But we as a society need to appreciate, honor and cherish those who volunteer. ऑनरेबल काउंसिल जनरल हमारे काउंसिल जनरल हमारे तसव्वुर खान साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इत्तेफाक की बात है कि इट्स ऑल मेयर इंसिडेंट्स कि इनकी जो है वो रवानगी भी है, जो कि इट्स पाकिस्तान गेन एंड आवर लॉस। लेकिन ये है कि अगर इनका करियर माशाल्लाह स्काई इज़ लिमिट, अगर इनका करियर वहाँ और अच्छे से अच्छा होता जाए। We really appreciate for everyone to coming tonight and joining us for this occasion. I want to thank Khan Saab and Mrs. Khan for honoring us tonight. You'll be truly missed. We're going to miss you. Our entire community is going to miss you. So we wish you all the best in your future endeavors. And I think Ifrat is the person who really has brought a change to our community, because all the other council generals who came, they were missing one thing. They were missing that good spouse. I think people give Imran Khan the credit for doing away with that VIP culture. It was actually Tasawwur Khan who did away with the VIP culture. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सब वाकई ट्रू पाकिस्तानी सफ़ीर हैं। पहले आप पाकिस्तानी सफ़ीर हैं क्योंकि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उन तमाम सफ़ीरान के जो लीडर हैं वो हैं जनाब तसव्वुर खान साहब। तो हम सब सफ़ीर हैं और आज मैं ये बड़े जज्बात के साथ कहूँगा और बड़े प्राउडली मैं कहूँगा कि तसव्वुर साहब से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था वो बाकायदा परेड हुआ था और इनको यकीन नहीं था कि परेड होगी और इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान डे होगा, और जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेशन किया और ताउन किया उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मैं असल में जिस यहाँ पे तसव्वुर साहब के मुतालिक मतलब आप लोगों को ज़ाती तौर पे कुछ इतनी कम्युनिटी से मैंने इंटरेक्शन किया कि सब तकरीबन इनको ज़ाती तौर पे जानते हैं कि तो क्या अच्छाइयाँ उनमें और क्या नहीं है।
तो अब जिन्होंने सबने यहाँ पे इनका तस्करा किया, मैं उसको सेकंड करता हूँ। खुशी है कि आप एक ऐसा कल्चर यहाँ पर रखकर जा रहे हैं। इफ़त भाभी की बहुत सारी बातें आपने की, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि जितने भी इनके प्रोग्राम होते थे इनके घर पर, उसका सबका खाना मज़ेदार ये खुद अपने हाथ से बनाती थी और ये अनबिलीवेबल था। तसव्वुर खान साहब का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और जब भी आते हैं ये मुझे पहले मुझसे ज़रूर गले मिलते हैं, तो ये इनकी मोहब्बत है, और इस तरह का मोहब्बत करने वाला आदमी मैंने बहुत कम देखा है। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं मिस्टर एंड मिसेस पटेल हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया और मुझे इनवाइट किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज वीकेंड है, इतवार का दिन है, और आप सब लोग वक्त निकाल के आए और आपने इनकी दावत को कबूल किया, मुझे इज़्ज़त बख्शी। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। असल में तारीफ़ के जो लायक है वो आप लोग हैं, जिन्होंने हमें बहुत मोहब्बत और बहुत इज़्ज़त दी यहाँ पर। बहुत सारी बातें हैं, मैं चंद एक बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो पता नहीं मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ एज्यूम कर ली गई या कुछ फैला दी गई। तो ये PSCC का एक फंक्शन था, तो वहाँ मुझे एक साहब मिले, तो उन्होंने कहा जी कि अभी खाने वाने के बाद यहाँ मौसीकी का प्रोग्राम होगा, तो आपका तो मौसीकी का कोई शौक़ तल्लक नहीं है आपका। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी क्यों, आपको क्या लगता है मेरे कान ख़राब हैं या मैं इतना बदज़ौक़ आदमी हूँ, आपने क्यों ये समझा है? तो मुझे एहसास हुआ कि शायद किसी ने समझा है कि ये कोई मौलवी शौलवी टाइप आदमी आ गया है। तो थोड़े अरसे के बाद ये कुछ एहसास होने लगा कि मुझे बड़ा कोई कोशर किस्म का आदमी समझा जा रहा है। ये इस कम्युनिटी का एतमाद है कि मैं अगर आपसे शेयर करूं कि लोग हर किस्म की प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आ जाते हैं, ज़ाती भी होती हैं, बात होती है, जो कुछ हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। जो एक बात आप ख़ास तौर पर आप बार बार ये कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने उसी में मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और जो कुछ समझा है, उसी को मैंने यहाँ पर जो है ना वो प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। प्लीज़ के बारे में हैं थोड़ा सा अंधेरा है। This is the recognition award presented to Momna Taki in recognition of your outstanding community service and contribution. Board of Directors of Pakistan American Chambers of Commerce. आइए जी, आप जरा हाथ लगा दीजिए, आप अमेरिका में इमिग्रेशन बिल के सिलसिले में एक बेचैनी पाई जाती है। जब से सदर ओबामा ने ये बिल पेश किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, खुसूसन रिपब्लिकन सेनेट और कांग्रेस में काफी इस बिल के खिलाफ इशारे दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस और सेनेट में रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है। ओबामा को मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन दूसरी जानिब जो इस बिल से फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए ये एक तोहफा भी है, लेकिन ये बिल इतना भी अच्छा नहीं जिसकी तवक्की की जा रही थी। ये सिर्फ उन लोगों को कानूनी हैसियत देगा जो लोग अपने माँ बाप के साथ आए और यहाँ जवान हुए, कॉलेजों में और आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। ये वो जनरल इमिग्रेशन बिल नहीं है जो कि रोनाल्ड रेगन ने पास किया था, जिसके तहत तमाम लोगों को एमनेस्टी दे दी गई थी। आज अमेरिका में 11 से 15 मिलियन लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं और गैर कानूनी तौर पे काम भी कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को मिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस बिल के जरिए वो पैसे भी बनाना चाहते हैं और टैक्स भी वसूल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ह्यूस्टन के बिजनेसमैन राना साहब और इमरान लालपुरिया ने कहा कि ये बिल एक पॉलिटिकल गेन है। कौंसल ऑफ पाकिस्तानी अफेयर्स के अदनान खान ने कहा कि एक अच्छा आगाज है, इस तरह दूसरे गैर कानूनी लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हामिद असगर इस बिल से पुर उम्मीद है। असेंबली मेंबर मैट समझते हैं कि गैर कानूनी लोगों के लिए अब कानूनी हैसियत देने का वक्त आ पहुंचा है। डॉक्टर आसिम महमूद का कहना है कि पाकिस्तानियों को इस बिल से बहुत फायदे पहुंचेंगे। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में लाखों लोग जो है वो
गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं और जिसमें ज़्यादातर जो आबादी है वो लातिनोज और मैक्सिकन और स्पेनिश की है, लेकिन इसमें पैसिफिक रिम से भी और सब कॉन्टिनेंट से भी लोग शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं। और हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है जनाब सदर ओबामा साहब का कि उन्होंने कम से कम 5 मिलियन लोगों को एमनेस्टी देने का वादा किया है, लेकिन उसकी अभी कोई वाज़े तौर पे रिपोर्ट नहीं आई है कि वो किन लोगों को जो है इजाज़त दी जाएगी यहाँ पे लीगली रहने की। तो इस सिलसिले में हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, देखते हैं कि उनकी राय क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। 3 साल के लिए वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, जिसमें जो भी इलीगल जो यहाँ हैं और जिनके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, जिसका बेटा है या किसी की माँ बाप सिटीज़न है या कोई ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनको वो दे रहे हैं जो उनके जो इलीगल लोग हैं। ये जो अभी अब हमारे प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने जो अनाउंस किया है, ये सिर्फ टेम्परेरी किया है। What do you think about the new immigration law? New immigration law is going to definitely help all the immigrants from all over the world, and we are already in the process to work on immigration population who is in limbo from Pakistani Americans. Especially we have spread the word to New York, Chicago and Houston, because that is the place where maximum Pakistani Americans are suffering that issue. We have actually already taken one initiative in the few days that I've been here. Dr. Asif actually flagged this issue that we needed to raise the salaries of the local staff. By local staff, I mean the people that we recruit locally to help out with consular affairs. So the Ministry of Foreign Affairs has been very gracious. They've given them a raise, so that should be an incentive for them to, work a bit harder. So your first achievement. But secondly, I wouldn't say it's an achievement, and it's really something which should have been done. The second thing that we are aiming for right now is that we are trying to increase the number of staff by 2. You're absolutely correct. We want to have the shortest possible turnaround time in the office. We also need to have an immigration system that allows for people to come to this country and add to the fabric of this country, because that's what this country is based on. We have huge immigrant populations from around the world over the last 300 years that have made America their home. I think it's very well received. We were always sending a message to the White House that we need an amnesty, we need an immigration reform done in the country, because there are people who've been here for a long, long time whose kids are now born here and they didn't have the immigration status. So now all of our people will be able to legally have an immigration status. It is going to affect the grassroots level, and that's where it was. Affecting the grassroots level people. It is really going to make a difference to those people. And that's what is going to really make a difference to working United States of America as well. जी नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर लोधी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान। आज मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से रिपोर्ट कर रहा हूं। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन की कसीर तादाद आबाद है। कम्युनिटी के नाम पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा सियासी और गैर सियासी तंजीमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने अपने काम जारी रखे हुए हैं। इनमें फ़लाही और इमदादी काम, जैसे पाकिस्तान में ज़लज़ला, सैलाब या किसी और किस्म की नागहानी आफत आने की सूरत में ये तंजीमें हर किस्म की इमदाद के लिए पेश होती हैं। लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में दूसरी तंजीमों की तरह पकोनी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड कुछ अरसे से सरगर्म अमल है। आज पाकोनी के सालाना गाला डिनर में नासो काउंटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर थॉमस, काउंटी क्लर्क और दूसरी आला सरकारी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की खासी तादाद ने शिरकत की। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि न्यूयॉर्क में करीबन तमाम सियासी और गैर सियासी तंजीमों के नुमाइंदे मासवाए आला सरकारी शख्सियात के साथ तस्वीर बनवाने के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई खातिर खा नताइज हासिल करने से कासिर हैं, जबकि इंडिया बांग्लादेश के नुमाइंदे सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क सिटी इंतज़ामिया में पाकिस्तानी अमेरिकन का नुमाइंदा होना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज यहाँ नासो काउंटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर थॉमस ने पाकिस्तानी अमेरिकन से खिताब किया। उन्होंने कहा, You ready for the secret? Don't tell anybody I told you. I can guarantee you will never get a ticket with my secret. Are you ready? Follow the speed zone. The reality is this. One of the complaints I get quite frequently, and what happens quite frequently, is
that kids are seriously injured in school zones. They are. It's happened, and that is why there is a school speed zones and limit. I'm going to be very honest with you. From where I'm standing as a police official, it makes it safer. It makes your children safer. And I can guarantee you one thing. Nobody here will ever get a ticket if you follow the speed limit. I promise you. As a matter of fact, if that's not true, I'll pay you a ticket. मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का सीईओ हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. Soni da ga ni da ni ni da, na ni da ga ma ga sa. Soni da ga ni da ni ni da, na ni da ga ma. Sa ga ma da da, ma da ni da ni da ni da ni da pa ma da ma ga ga de ga ma ga pa ma ga.
अगर आपका दिल चाइनीज खाने को चाह रहा है तो देर ना कीजिए। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां लजीज और इश्तेहांगेज चाइनीज डिशेस चाइनीज शेफ के हाथों तैयार की हुई मिलती हैं। स्वीट एंड सार और चिकन कॉर्न सूप पाकिस्तान के चाइनीज रेस्टोरेंट की याद ताज़ा कर देगा। ताज़ा सब्जियों और जंबो श्रिम्प से बनाए हुए चाउमीन और चॉप सुई की बड़े पोर्शन जी भरकर खाइए। मुंह में पानी भर लाने वाले वेजिटेबल चिकन और श्रिम्प फ्राइड राइस आपकी जियाफत को चार चांद लगा देंगे। हर किस्म की तकरीब की केटरिंग के लिए याद रखिए उस्मानिया चाइनीज रेस्टोरेंट, 2244 वेस्ट डीवॉन, 7733384488। नाज़रीन, आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, और सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। नाज़रीन, हमने डिसाइड किया है कि जाने से पहले जब भी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो, एंड हो, हम आपको अपने वतन की कोई ना कोई खूबसूरत धुन सुनवाते हुए जाएं ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। अगर आप पेशावर से हैं, अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप सिंध से हैं, अगर आप मुल्तान से हैं, या अगर आप बलूचिस्तान से हैं, तो आप उन्हें आपको अटैच कर सकें। तो इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।